Okay, let's start it again. So, so today we will discuss the robotics. Now, in the case of robotics, you already know that it is a field where we will design and develop the devices that can perform their task on their own and with the guidance. So, when they are able to perform their task on their own, when they are learned. So, initially we have to give them certain kind of guidance or learning. In other words, we can say, so that based on that learning, they can learn the new things with the environment in the future. So initially we have to give them an initial learning, and after that they are able to perform the task on their own. Now you can see this robotic is basically a subset of embedded system. Why? Because in a robot you can see many type of embedded system to run each and every part of your robot. If you talk about the humanoid, in the case of humanoid, a human like robot, you will find many such embedded systems are there. Okay, so if you will see the robotic, it is not only a mechanical device or having some electronic circuitry, it also has some kind of intelligence. So some part of AI is also very much there in the robotics. Okay, so if you see a robot, a typical robot can sense its environment, it can manipulate the things in environment, it has intelligence embedded in it, and has motion and translation in one or more axes. So if you see the robot, there are two types of things that we usually see in a robot. The first thing is a robot could be an automatic device. It means you code certain kind of functionality in this and it performs that task only. So instead of calling it as a human like device, we will say it is an automatic machine. So there are certain things like washing machine. You do certain kind of programming in that and it performs that particular task only. It is not able to learn something from the environment and it cannot perform some extra task. So whatever you code, it performs that much task only. Okay, but once you code that particular thing, once you give certain kind of input to it, it work accordingly. Then after giving the input, you do not have to intervene in between and and operate the machine manually. Once you give this particular thing with the voice, nowadays you can give that particular information. So these kind of devices are automatic. So robot could be automatic also, it could have intelligence also. So अगर हम रोबोट की बात करें, तो अगर आप रोबोटिक आर्म की बात करोगे, तो रोबोटिक आर्म एक ऐसा डिवाइस है जो ज्यादातर आप कहोगे कि वो ऑटोमेटिक डिवाइस होता है. ठीक है, इट डिजाइन एंड इट इज प्रोग्राम फॉर डूइंग अ सर्टन काइंड ऑफ टास्क. इट डू दैट काइंड ऑफ टास्क ओनली. But yeah, there are certain kind of robots which learn from the environment also. So you give some initial learning to them, and then based on the input from the environment, they enhance their learning and then able to perform the other task also in the future. So in a robot you can see these two categories. It could be a purely automatic system where it does not have any kind of intelligence. There you just program certain thing and it perform that kind of task. Or it could have some kind of intelligence also, where it is able to perform the task which you haven't learned, which you haven't give the training to that particular robot, but robot is able to that thing because of the self learning concept. So if you see the robot, working of a robot is mainly in the three phases. So first is the perception, second one is processing, and third one is the actuation. So you can see these three stages are similar to the working stages of an embedded system. How an embedded system will work? It takes the input from the environment using the sensor, it processes that particular input, and then based on the process data, it sends the signal to the actuator devices so that the actuator devices work accordingly. So here also in the case of robot, you will find the same kind of phases. So in the case of perception, what robot will do, it sends the information or it obtain the input from the environment using the sensor. Now here in the case of robot, the sensors could be a vision sensor, it could be a sound sensor, it could be a tactical sensor. Tactical sensors are one which is used to take the touch related information. Okay. Now the second phase is the processing. So once your robot obtain the information from the environment, it process that particular information and generate the required control signal, and that control signal will be sent to the uh, that control signal will be sent to the actuator.
टू परफॉर्म सर्टन काइंड ऑफ एक्शन। तो ये जो कमांड्स होती हैं जो कंट्रोल सिग्नल के फॉर्म में हो सकती हैं, कंट्रोल वर्ड के फॉर्म में हो सकती है, वी सेंड दैट पर्टिकुलर सिग्नल टू द एक्चुएटर एंड देन एक्चुएटर परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क दैट वी वांट फ्रॉम द robot. So what could be the actuator here? It could be a motor, it could be a video, it could be a audio device, or you can say it could be a motor, it could be video or audio devices. You just display the information. It may possible that it create a sound for that particular information. So that depends that what kind of action you want from your robot. So if we talk about the sensor, perception sensor, so here we have already discussed. So usually your robot has three type of sensor that it used for the perception part: vision sensor, sound sensor, and the tactical sensor. So what is a robot vision? If you see that robot vision is basically computer vision which is captured using the CMOS or CCD arrays. What is CCD array? It is a charge coupled device array. So CCD array, if you will look at the technology, it is the same technology that you will find in your camera phones. Okay, so it take the picture of the environment and then from that picture it will take the information. So it extract the pixel information or it extract the required information from that particular image and send that information to the processor for the processing work. In the case of sound, if you say that it take the information in the form of sound, it could be a microphone. It takes the information, it takes the audio signal using the microphones, then it process that particular analog signal, because when the analog signal will come, the device, your this the processor is a digital thing, so processor is not able to uh, process that particular information. So it take analog signal, convert it into the digital form, it filter that particular information and send the process analog, send the process data, voice data to the processor, and the processor process it and then perform certain kind of action. And it could be a tactical sensor. So tactical sensor, as I've already told you, is used to take the touch related information, and most of these sensors work on the concept of impedance, और यू कैन से दे वर्क ऑन द इम्पीडेंस कह सकते हो, कैपेसिटेंस कह सकते हो, आप रेजिस्टेंस कह सकते हो। इट इसी टाइप के सेंसर होते हैं। तो जब भी डिफरेंस होगा, आपके रेजिस्टेंस में डिफरेंस आएगा या आपके कैपेसिटेंस में डिफरेंस आएगा, तो यू फाइंड सर्टन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक टेम्परेचर इंफॉर्मेशन है, आपको फाइंड आउट करना है, तो वहाँ आप कैपेसिटेंस भी यूज कर सकते हो, रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो, ह्यूमिडिटी की इंफॉर्मेशन देना। तो दीज काइंड ऑफ सेंसर आर बेसिकली द टैक्टिकल सेंसर विच वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ impedances. So whenever you will find there is a difference, you say that this is the temperature now. Okay. Now actuator, as we have already see that to perform the actions we require the actuators, and in the case of robots also the actuator could be a motor or the video or audio devices. So it may possible that robot is just play that particular information, whatever information it process, it shows you that this information on a display device. It may possible that it also generate a audio data, ये भी पॉसिबल है, या हम मोटर यूज कर सकते हैं। थ्रू दैट मोटर यू विल एबल टू परफॉर्म सर्टन काइंड ऑफ टास्क, लाइक आप फैन को ऑन कर रहे हो, या आप वाटर को पंप कर रहे हो, या व्हील को टर्न कर रहे हो, या यू 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 ग्रैब सर्टन ऑब्जेक्ट एंड पुट दैट ऑब्जेक्ट एट सर्टन अदर प्लेस। ओके, तो हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द मोटर। सो यूजली मोटर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एक्चुएटर। नाउ द थर्ड थिंग इज द इंटेलिजेंस। So intelligence come in between the sensor and the actuator. That is the main brain of your robot. And how much intelligence you want to provide to your robot, that depend on in what kind of application you are using. See, a robotic arm is also a part of it. It is also called as robotic, but there the intelligence is very less. You code only certain kind of information in that, and it work accordingly. Okay, but if you take a humanoid kind of robot which take the input from the input environment and do some precise, like बायोमेडिकल में जो आप यूज कर रहे हो, मेडिकल एप्लीकेशन में जिस टाइप के आप रोबोट यूज कर रहे हो, उन रोबोट में इंटेलिजेंसी होती है, प्रिसीजन बहुत हाई होता है उनके अंदर। तो आप कैसी इंटेलिजेंसी अपने रोबोट को प्रोवाइड करना चाहते हो, दैट डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन इन विच यू आर यूजिंग योर रोबोट्स, एंड हाउ यू विल ब्रिंग दैट इंटेलिजेंसी यूजिंग द इनिशियल लर्निंग, and based on that initial learning your algorithm will learn the new things from the environment and it updated database, and then accordingly your robot is able to perform the new task in the future. So
So to perform any application in a mobile robot, what we need sensors, we need actuator, we need a control algorithm, या जैसे हम कहते हैं initial coding, जिसके basis पे आपका robot work कर रहा होता है, and sometimes we also need a communication system so that we can provide or we can pass this information to somewhere else. So it is an optional part, not necessary that every robot has this particular communication system, but three mandatory things are always there: sensor, actuators, and a control algorithm, which give the intelligence to your robot. Now, if you see the type of robots, there are two type of robots. One is the stationary, mobile, and the humanoid. So stationary robots are one which are not able to move. If you see these robots overall, they are steady, they fixed at one particular place, but they could have the moving part. जैसे कि moving arm हो सकता है उसके अंदर, ठीक है, तो इस टाइप के moving parts हो सकते हैं आपके robots के अंदर, but overall your robot is not moving from one place to another place. If you look at the mobile robot, they have the capability to move around in the environment and not fixed to one particular physical location. As the name suggests, you know that these robots are able, like if you see the nowadays the drone is that kind of device. ठीक है, और बहुत से ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि एंटी माइन डिवाइसेस होते हैं, छोटे रोबोट्स होते हैं, दे कैन मूव एंड देन दे कैन फाइंड आउट द माइंस एंड गिव यू दैट पर्टिकुलर information. Now we have third type of robots also, that is the humanoid robots. So humanoid robot is one which have the appearance as the human, जो human जैसे होते हैं, और हमारा मेन पर्पस होता है इन रोबोट्स के अंदर ह्यूमन लाइक नेचर को डेवलप करना. दे आर एबल टू डू द ह्यूमन लाइक थिंग्स. ह्यूमन जैसे रन चल सकते हैं, ह्यूमन जैसे वो बात कर सके, ह्यूमन जैसे वो अंडरस्टैंड कर सकें. सो हियर we want the human like behavior from those robots, so that in future at certain places we can replace the human, put those robots to do those kind of things. ओके, सो ह्यूमनॉइड रोबोट वो होते हैं जो ह्यूमन लाइक थिंग्स को अंडरस्टैंड कर सके. वहाँ हमारा मेन पर्पस प्रिसीजन लाना कभी नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर प्रिसीजन नहीं होता. ह्यूमन ब्रेन जो है वो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन एवरेज लेवल पे प्रोसेस कर रहा होता है. यहाँ हम उस टाइप की इंटेलिजेंस उसमें डेवलप करना चाहते हैं कि वो ह्यूमन जैसे बिहेव कर सके. ठीक है. Now if you will see these robots, they are basically two, you can further categorize into two more parts. It could be an open loop system or a closed loop system. So if you see, we have a path. We first do the perception, then we do the processing, and then we do the action. Okay, so if this is the path, your action does not depend on the perception. ठीक है, या आपका जो परसेप्शन, सॉरी, एक्शन तो आपका परसेप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पहले हम परसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस करेंगे, एंड देन एक्शन based on the perception. But if your perception does not depend back on the action, whatever action you will take, it will not change the perception part, then these kind of robots are called as the open loop robot. Like take the example of a translator. If you make a humanoid which able to do the translation thing, so what that robot will do, it listen the information, one language information from the environment, it send that information to the microcontroller, convert it into the another language, and then it send the same information to the your audio device, that is your actuator, and it will speak in some other language. ओके, तो यहाँ पर अगर सपोज हम इंग्लिश से फ्रेंच की बात करते हैं, तो इंग्लिश में हमने इनपुट लिया, प्रोसेस करके उसे फ्रेंच में कन्वर्ट किया, और फ्रेंच को हमने क्या किया, साउंड को हमने प्ले कर दिया. अब आप फ्रेंच बोल रहे हो, ये एक्शन है. इस एक्शन पे आप इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे रिसीव कर रहे हो या उसे कैसे प्रोसेस कर रहे हो, ये चीज़ नहीं चेंज होने वाली. ठीक है, तो ये दिस टाइप ऑफ रोबोट्स आर कॉल्ड एज द ओपन लूप रोबोट. Whereas in the case of closed loop robot, you will find this thing that the perception depends on the action. So you perceive certain information, you process the information, based on that you do certain action. And based on the action, again your perception is changed. So you next time when you perceive the environment, you perceive that environment based on the action itself. Like take the example here, we discuss one example. You made a motion robot, and the purpose of the motion robot is to follow a red ball. So what that robot will do, it take the picture of the environment having that red ball. Okay, and whenever the ball will move,
Robot will also move. So you perceive the information, take the picture of the environment, provide the picture to the processor. Processor will find the ball in the picture, and then it send actuator and it calculate the distance and everything and send the information to the motor, and motor will move in that particular direction. ठीक है. अब अगर आपका जो बॉल मूव कर रहा है, अगर वो पिक्चर में डिस्प्लेस होता है, हमारा मेन पर्पस क्या है? टू कीप द बॉल इन द सेंटर ऑफ द इमेज. Now if your ball is not in the center of the image, then you take the picture, you process the picture, and you do certain action. Your mobile, your robot will move in that direction. Once it move in that particular direction, if the ball is displaced, now ball is not in the middle of the image, so based on that action again the perception will change. So you try to capture the image, you again, अब आपका एक्शन इस पे डिपेंड कर रहा है. आप नेक्स्ट टाइम जब पिक्चर कैप्चर कर रहे हो, तो आप पिक्चर इस तरीके से कैप्चर करना चाह रहे हो कि बॉल सेंटर में हो. तो इसमें एक्शन जो है, एक्शन के बेसिस पे आपने अपने परसेप्शन को क्या किया? चेंज किया. आपने फीडबैक मैकेनिज्म लिया एक्शन से, एंड बेस्ड ऑन दैट नाउ योर नेक्स्ट परसेप्शन और नेक्स्ट इमेज डिपेंड ऑन कि लास्ट टाइम आपने जब मूव किया था रोबोट की तरफ, तो आपका बॉल जो है वो सेंटर ऑफ द इमेज था या नहीं था. सो दीज आर कॉल्ड एज द क्लोज लूप systems. Okay. Now let's talk about the designing of the autonomous robotic system. And as we have discussed, these kind of robots perform the task in an unstructured environment where the continuous human guidance is not there. Okay. So if you see these kind of robots, like if you talk about a mobile robot made up for the find out the mines. तो अगर ऐसे रोबोट की हम बात करेंगे, तो इसमें आप क्या देखोगे? दे हैव द मैकेनिकल पार्ट, the hardware part of that particular robot. They have some electronic element with the AI embedded in it. So if you want to make those kind of applications, what you have to do in this particular case? So to design this kind of robotic system, first of all we have to see that what are the other robots available in the market. Say suppose you have a soccer playing robot also, so that kind of robot also you can use in the this mining application. ठीक है, तो वो भी यूज कर सकते हो, पर आपको ये देखना है कि उसको हमें किस तरीके से फाइन ट्यून करना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एप्लीकेशन. Then you have to study certain kind of algorithm and find out that which algorithm work perfectly for you. Okay. Then you design the hardware and software, choose the right sensor and actuators, and integrate the whole system. तो जब भी हम कोई ऑटोनॉमस रोबोट सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं, कोई भी नया सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं, we have to always first do the study of the market. We have to always see that what are the existing solutions available. May not necessary that all those solutions are available in the same field. जरूरी नहीं है कि मिलिट्री एरिया के में जो रोबोट्स अवेलेबल हैं हम उन्हीं को स्टडी करें. वी विल try to find out all existing solution in other areas also, and then we have to see how we can adapt those solution into our application. Okay, so the next application that we will discuss today is the biomedical application. Now in the biomedical application you will find various kind of biomedical devices which is used to help the doctors. Now it is just the reading thing, what x-ray will do, then what your MRI will do, what your CT tomography, what is the pulse oximeter. It's just the description of those things. ये devices क्या होते हैं, ये किस काम में use होते हैं. So I am not going to read out this thing. I leave this particular part to you people. Give a reading to this part, biomedical application. It's just the description of these devices, why we use these devices. Like हम pulse oximeter क्यों use करते हैं? We use the pulse oximeter for finding the oxygen level in the body. And how we do that? We pass a pulse from the finger or the earlobe, and based when you pass, then what is the, यू कैन से, जब आप उसको पास कर रहे होते हो तो कितनी ट्रांसपेरेंसी आप अचीव कर पा रहे हो, उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि ऑक्सीजन कंटेंट कितना है या पल्स रेट कितना है. ठीक है, तो ये आपका इतनी सी इसकी वर्किंग है और इतना ही इसका यूज है. सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड आउट दिस थिंग, जस्ट गिव अ रीडिंग टू ऑल द बायोमेडिकल एप्लीकेशंस.
Okay, so let's discuss the last part of our chapter, that is the BMI or the brain machine interface. It is a very important part, and this is a very current technology on which people are working on a very booming research area, but very complicated. Now, as the things are going very much advanced, we want that things to be worked automatically. पहले हम चाहते थे कि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन वो वर्क करने लगे, तो हमने कोडिंग करना चालू किया, फिर हमने, पर उसमें गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती थी। देन वी वांट कि ये खुद से डिसीजन लेना चालू करे, तो हम एआई लेकर आए। नाउ व्हाट वी वांट नाउअडेज कि व्हाटएवर यू थिंक इन योर ब्रेन, यू आर जस्ट थिंकिंग एंड योर डिवाइस विल वर्क लाइक दिस। So this is where the BMI will come, which try to convert your human thought into the actual action without even physically touching this thing or without even giving any kind of instruction to that thing. ठीक है, पहले हम रिमोट से टीवी वर्क करते थे, फिर हम वॉइस लेकर आए, वॉइस ऑपरेटेड टीवी लेकर आए। ना व्हाट इट इज वी वांट कि हम जस्ट सोचे कि सोनी चैनल लग जाए और ऑटोमेटिकली टीवी में सोनी लग जाए। ठीक है, we want that kind of functionality, and there where the BMI will come. So there are already many, though it looks very complex कि आपके ब्रेन के थॉट को रीड करना, आप जो थॉट ले रहे हो उस सिग्नल को कैप्चर करना, उसको रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना, एंड देन उसे एक्शन में कन्वर्ट करना। दो इट लुक बिट कॉम्प्लेक्स, बट देर आर ऑलरेडी सम डिवाइसेस अवेलेबल in the market which work on this technology, and these devices are usually able to translate the human thought into the movement of some prosthetic organ, like आपका prosthetic arm है, leg है, you just think कि मुझे forward move करना है, तो वो leg automatically forward move करने लगेगा। या आप कंप्यूटर के कर्सर को मूव करना चाहते हो, तो यू जस्ट थिंक इन योर ब्रेन दैट आई हैव टू ब्रिंग द कर्सर ऑन दिस पोजीशन ऑफ द स्क्रीन, एंड द कर्सर विल ऑटोमेटिकली मूव टू दैट, यू आर नॉट टचिंग द एनीथिंग। ठीक है, आप अपना हेड भी मूव नहीं कर रहे हो, कुछ भी मूव नहीं कर रहे हो, आप फिजिकली कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट थिंकिंग दैट थिंग इन द माइंड। ठीक है, और बेस्ड ऑन दैट action will be performed. So this can be done using the BMI, that is the brain machine interface. So here you can see the block diagram of brain machine interface. You just first read the signal from the brain, then you amplify and filter the signals, then you analyze the signal. Obviously बात है, अगर हमें brain के thoughts को action में convert करना है, तो पहले हमें read करना पड़ेगा, फिर हमें उन्हें एनालाइज, उन्हें हमें फिल्टर और एम्पलीफाई करना पड़ेगा। फिल्टर और एम्पलीफाई हम इसलिए करते हैं because whatever signal you read from the brain is actually very weak and noisy signals. So you have to first filter and amplify those signals, then you analyze those signals, and based on the analysis you will perform certain kind of tasks. Now let's see. Um, so if you try to define the BMI, you can say it is a communication channel. It is a communication channel between the human brain and the external device. And if you see this communication channel, what this communication channel is doing, it is working as an interpreter to convert the human thoughts into the action. So this is what the BMI, it is a communication channel which serve as an interpreter or translator to convert the human thought into the corresponding action. So we have already seen that this communication channel is made up of three stages: the reading, signal reading, amplification of the signal, and then decoding of the signal. So let's discuss those stages one by one. First one is the signal reading stage. So signal reading stage could be of two types: invasive and non-invasive. So first we talk about the non-invasive technique. In the case of non-invasive, we usually use the electroencephalography, or you can say the EEG technique. In the case of EEG technique, what you will do to read the signal from the brain, you place the electrode on the human scalp. तो जो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनके थ्रू आप ह्यूमन, जब भी आप whenever you think something, there is a signal generated in your brain, and we try to capture that particular signal, and to capture those signals we place, we use the electrodes, and those electrodes we put on the scalp of the human body. So in this case, as you can see कि हम scalp के ऊपर लगा रहे हैं directly electrode, so there is no surgery required in this case. So here you can see this is that thing. There are certain kind of electrodes
placed on the human scalp. Okay. Now, what is the issue in this case? The issue in this case is this, that when you put the electrode on the advantage, obviously बात है आपको कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, so you can connect this BMI interface to any human because you do not the human does not went through the surgery to use the BMI, so you can connect it to any human. But the issue is this, because you put the electrode on the scalp, so whenever your electrode read the signal, the signals are highly attenuated due to the skull. स्कल से होते हुए आपके स्कैल्प तक आते हैं, उस वजह से बहुत ज़्यादा ये नॉइजी होते हैं और बहुत ज़्यादा वीक सिग्नल ये होता है, जिसे रीड कर पाना जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है. रीड तो हम कर लेते हैं पर हमें फाइंड आउट कर पाना, उसको डिफ्रेंशिएट कर पाना, हर एक डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी के लिए ह्यूमन ब्रेन डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल जनरेट करता है. Sometimes we are not even able to differentiate कि whatever signal we have read is basically the one which we try to read. ठीक है, और किस पार्ट से आ रहे हैं ब्रेन के, आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स से आ रहे हैं, आपके बैक से आ रहे हैं, आपके ब्रेन के किस पार्ट से ये सिग्नल जनरेट हो रहा है, ये फाइंड आउट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. एंड दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज फॉर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज एक्टिवेटेड. ठीक है, तो अगर आप कुछ चीज़ मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हो तो आपके ब्रेन का एक पार्ट एक्टिवेट होगा, आप कोई फिजिकल एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो अदर पार्ट एक्टिवेट होगा. तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है जानना कि जो सिग्नल है वो ब्रेन के किस पार्ट से आ रहा है. ठीक है, और अगर हमें ये भी पता चल रहा है किस पार्ट से आ रहा है तो दो नियर बाय सिग्नल्स को डिफ्रेंशिएट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो दिस इज़ अ मेजर इशू इन द केस ऑफ नॉन इन्वेसिव दैट इज EEG टेक्निक, कि आप स्कैल्प के ऊपर लगाते हो तो स्कल के थ्रू जो आता है सिग्नल वो बहुत ज़्यादा वीक सिग्नल और नॉइजी सिग्नल होता है. तो इस सिग्नल के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है. ठीक है, so the second technique, so as I've already told, what is a spatial resolution? It is the ability to read the signals, to differentiate the signals which come from the वन पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो ऐसा सेट कि हमें ना केवल ये पता करना है कि सिग्नल फ्रंट से आया है ब्रेन के या बैक से आया है, हमें ये भी पता करना है कि अगर फ्रंट से आया है तो दो नियर बाय सिग्नल्स के बीच में हम डिफ्रेंशिएट कर पाए. सो दैट इज कॉल्ड एज द स्पेशल रिजोल्यूशन, एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सिग्नल फ्रॉम टू वेरी क्लोज पार्ट ऑफ द ब्रेन. ओके, सो okay, so we go to the invasive technique, and what happened in the case of invasive approach, we put the electrode inside the brain of a human, and for that we need the surgery. So here in this case, you cannot connect a BMI interface to any human because the human has to went through the surgery in this case, and not everyone is ready to do this kind of thing. But in this case, there is an advantage. So you here you can see this is the electrode that you place inside the brain. But the advantage is this, in this case the spatial resolution is very high. You are able to find out that the signal is coming from which part of the brain, and you are able to differentiate between two nearby signal coming from one part of the brain. ठीक है, सो ये चीज होती है आपके इन्वेसिव टेक्निक के अंदर. बट द ओनली डिसएडवांटेज, यू हैव टू वेंट थ्रू अ सर्जरी इन दिस केस. Now the second stage is the amplifier and the filter stage. So whatever signal, no matter whether you take the signal from the invasive technique or non-invasive. Okay, I forgot to give the name of the invasive technique. It is electrocardiography, that is ECOG technique. ठीक है. Now, if we talk about the amplifier and filter stage, as I've already said, no matter आप invasive से लेते हो या आप non-invasive technique के through signal को read करते हो, signal is always very weak. In the case of when you read it from the brain, so we have to always amplify the signal and we also have to filter the signal. So we use a very high quality differential amplifiers to amplify these signals. And what this amplifier will do, they amplify the signals from 60 dB to 100 dB, or you can say in a voltage range, if you will talk 100 volt to 1 lakh volt. ठीक है,
और यू कैन से, अगर हम बात करें माइक्रो वोल्ट में, अगर आपने कोई सिग्नल रीड किया है तो उसे वो मिली वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इतना आपके जो सिग्नल है उसको वो एम्पलीफाई करता है। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि जो भी सिग्नल आपके पास आता है वो बहुत करप्टेड सिग्नल होता है। So we have to not only amplify the signal, we have to also filter the signal so that you are able to analyze the required information. So filtering stage is very much important. Usually we will use a notch filter in the case of BMI interface which work on the power supply voltage. ठीक है, तो ज़्यादातर हम इस केस में नॉच फिल्टर यूज़ करते हैं जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी यू कैन से 30 to 70 हर्ट्ज के आसपास होती है। ये हमारी पावर सप्लाई की फ्रिक्वेंसी होती है, तो हम इसी फ्रिक्वेंसी पे नॉच फिल्टर को यूज़ कर रहे होते हैं। वाई वी यूज एट द पावर सप्लाई फ्रिक्वेंसी सो दैट वी कैन अवॉइड एनी नॉइज विच इज क्रीपिंग इनटू द सिस्टम वाया द पावर सप्लाई। तो ऐसा नहीं हो कि अगर आप इसकी पावर सप्लाई से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी पे आप करोगे तो हो सकता है, क्योंकि हर डिवाइस आपका पावर सप्लाई से कनेक्टेड होता है, पावर के थ्रू वो रन कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना केवल ब्रेन से जो सिग्नल आ रहा है उसमें ऑलरेडी नॉइज है और एक्सटर्नल नॉइज भी उसमें ऐड हो जाए। तो हम नहीं चाहते कि एक्सटर्नल नॉइज से वो ज़्यादा अफेक्ट हो, तो इसलिए हम इसे पावर सप्लाई वोल्टेज पे फिल्टर कर रहे होते हैं। ठीक है, now the last stage is the analyzing and decoding of the signal. So once you read the signal, then you amplify the signal. Now you have the actual process signal. Now you have to analyze and find out that what is the meaning of that particular signal, why your brain has generated this signal. So to do this thing we use different kind of parameters. So we discuss some of the parameters here. One parameter could be the location of the electrode. आपने जो इलेक्ट्रोड प्लेस किया था या उसने जो सिग्नल को रीड किया है वो किस पार्ट से रीड किया है, आपसे फ्रंटल से किया है या बैक से किया है। ठीक है, इस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फ्रंटल से भी किया है तो वो दो नियर बाय सिग्नल को डिफ्रेंशिएट कर सके। ठीक है, सपोज इफ यू टेक द एग्जांपल, अगर आप आई से रिलेटेड कोई मूवमेंट कर रहे हो या विजन से रिलेटेड, इफ योर signal is generated, okay, if you're closing the eyes, if you're opening the eyes, so if this kind of signal will come, they come from the visual context of the cortex of the brain. If you will talk about some memory related thing, or if you talk about some uh, physical movement, live movement kind of thing, then the signal come from the motor context. तो आपके विजन से आ रहा है, सपोज विजुअल से आ रहा है, अभी ओपनिंग के लिए आ रहा है या ये क्लोजिंग ऑफ आई के लिए आ रहा है, ये डिफरेंशिएट करना भी बहुत जरूरी है। तो लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज द इम्पोर्टेंट। सेकंड थिंग इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, वट एवर सिग्नल यू आर एबल टू रिसीव, in which category, frequency category it will come. So there are certain categories like alpha, beta, gamma, theta. ठीक है, तो आप कौन सा सिग्नल कैच किए हो, आपने किस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को कैच किया है, क्योंकि हर एक डिफरेंट एक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल जनरेट होते हैं। लाइक इफ यू विल टॉक अबाउट द अल्फा वेव्स जनरेट होती हैं जब आप ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ आईज कर रहे होते हो। ठीक है, जब आप अलर्ट स्टेट में होते हो तो एकदम से अगर आप चौंक जाते हो किसी चीज को देख, इफ यू आर इन द शॉकिंग स्टेट समथिंग लाइक दैट, देन द बीटा वेव्स विल बी जनरेटेड एंड यू कैन सी द फ्रीक्वेंसी। अल्फा वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, बीटा की उससे ज्यादा हाई होती है, और गामा वेव की फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा हाई होती है, which you easily generated when you try to do some memory related. If you try to remember certain kind of things, then very strong signal will be generated, which is the gamma wave. So if you have to find out कि आपने जो सिग्नल कैच किया है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, then the third thing that you have to find out is the strength of the signal. तो अगर से सपोज हम बात करते हैं कि हमारे पास हमें पता है कि अल्फा वेव इज जनरेटेड, now why the alpha wave is generated, it is generated for opening of the eyes or is it generated for the closing of the eyes. So this is two nearby signals coming from the same part of the brain. Okay, so you have to find out the strength of the signal. ठीक है, ओपनिंग के लिए अलग स्ट्रेंथ का अल्फा जनरेट होगा, क्लोजिंग के लिए अलग स्ट्रेंथ का आपका जो है वो अल्फा वेव जनरेट होगा। सो you have to find out the strength of the signal also to decode the signal, that what action your brain try to convey using that particular signal. Okay, so like take an example, like if you have a robot and if you want that your robot will be moved backward or forward based on your eye movement,
So if you open the eye, it will move in the forward. If you close the eye, it will move in the backward direction. So to do this particular thing, आपको visual cortex से आपको signal लेना होगा. Opening alpha waves आपको find out करनी होंगी. Opening और closing alpha waves में आपको जो है opening और closing के लिए जो alpha waves generate हो रही हैं उनको differentiate करना पड़ेगा. No, it looks very easy. It looks very simple. Once you find out those differentiate, if you are able to differentiate between those two things, you can simply write an algorithm, and based on that algorithm, your mobile robot will work. Now, it sounds so easy, it looks so easy, but it's not that easy. Issue is this: the human brain is very complex, and it is different from one person to another person. So, if you connect a human to the BMI interface, it is not only the BMI interface who has to work in this particular processing and reading part. It is human also who has to be trained to work with the BMI. ठीक है. तो अगर आपको रोबोट आपका जो BMI इंटरफेस है वो ही सिग्नल को रीड नहीं करेगा, आपको ह्यूमन को भी इस तरीके से ट्रेन करना है, उसके ब्रेन को इस तरीके से उसको ट्रेनिंग देना है कि वो उस तरीके की आपका ह्यूमन ब्रेन उस टाइप की अल्फा वेव्स को जनरेट कर सके जिसे BMI फाइंड आउट कर सके या जिसे वो डिफरेंशिएट कर सके. तो ये इजी लगता है पर ये इतना इजी होता नहीं है. ऐसा नहीं होता कि वी मेड अ BMI इंटरफेस एंड आई कैन कनेक्ट दैट BMI इंटरफेस टू एनीवन. I made a BMI interface, I connected to a person A and trained on person A. Now I can connect the same BMI interface to the person B and able to work in the same manner. No, it's not like that. You not only have to train the BMI, you have to train the human itself to work with the BMI interface so that the human brain is able to generate the signal that the BMI can also process. So that's what we try to say here. This is what written here in this all three slides. Okay. Now the last thing is the end devices. Once what is the end device? We started with the human brain. We have to forward that particular human thought to certain kind of action, and how we perform those action using the end devices. So your end devices may be a robot, it could be a prosthetic limb, it could be a computer cursor, it could be any device which you want to run with that particular human thought. ठीक है. तो इस केस में आपके जो आपका BMI इंटरफेस होता है, इट अंडरस्टैंड द सिग्नल, इट जनरेट द नेसेसरी सिग्नल टू मेक द डिवाइस वर्क. नाउ सो इफ यू विल सी सर्टन काइंड ऑफ एप्लीकेशन. तो एक हमने कंप्यूटर कर्सर की बात की थी कि आप कर्सर को इमेजिन करोगे, आपका BMI उसको रीड करेगा एंड देन कर्सर आपका मूव करेगा. ठीक है. Then second kind of application here you can see that this is that computer application. So in this case the cursor is not moving but a prosthetic organ is working. So you have to move the arm. You want that arm should do certain kind of thing. So to doing this you are thinking, you're not touching, you're not coding anything in the computer, you're not giving any voice signal, you're just thinking this particular thing. This thought will be sent through BMI interface to the computers, and what computer will do, it will process the information, send the information to the prosthetic organ and the organ is able to do. ठीक है. समटाइम जो आपका एंड डिवाइस है वो ह्यूमन ऑर्गन इटसेल्फ हो सकता है. से सपोज ड्यू टू सर्टेन काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स और समथिंग लाइक दैट देयर इज अ ब्रेकेज इन योर connection between the human brain and your one of the human organ. Like suppose take the example of your hand. Suppose कि किसी due to certain kind of accident, now your brain is sending the signal but the nerves are break. So when the nerves are break, that signal will not go to the hand, so your hand is not able to move. So here also we can use the BMI. What BMI will do, it takes the signal from the brain, it processes the signal, it bypass that brain nerve mechanism and send the signal to the hand itself. Now hand is able to move, because how hand will move, it will move via the signal received from the brain itself. तो अगर नर्व सिस्टम हमारा खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, तो हम उसे भी रिप्लेस कर सकते हैं किससे,
BMI के थ्रू। तो आपके हैंड को सिग्नल जाएगा, हैंड है आपका बिल्कुल सही है, बट इंटरनल आपके वो कनेक्शन जो थे ब्रेन से वो डिस्कनेक्ट हो गए, तो वो भी हम रिप्लेस कर सकते हैं BMI के थ्रू। सो योर एंड डिवाइस could be a human organ also in this case. ठीक है, so these are some of the important milestones. You can give a reading to these milestones also, what all things has been done in the case of BMI technology. So with this, I end the chapter here only. In the next class, we will start with the A6 technology. So if anyone have any doubt, you can ask that doubt. Okay, yes, our time is running.